I will continue with the session. If it is live, if it is going live, then I'm welcoming everybody to the session. And जल्दी ये live जाऊनी तो at least recording will be there and I will upload the recording. So hello everybody, welcome and good evening students. I hope समस्ते भलो अछंती. Your preparation is going awesome. So आज आम गोटे नुआ इनिशिएटिव चालू करवा. As you know, 52 days are left with us Odisha Civil Services prelims by, and this is a very nice time to start with your prelims. So daily basis रे हमें we will have a fashion of subject wise. जेमते आज आम start करवा environment ecology. So A to Z all the things will be covered through the MCQ. Shankar IAS book को हमें try करवा to understand through the basics, to attack the concept, and multifarious topics, multifarious domains we will be covering. Okay. Apart from that, tricks and tips आपनकर एतरे किछि भी कमी रहबनी. So let's get started. So this is Odisha Civil Services Target Day 52 presented by me Yagyasani Patra. एंड या पे जो आपनकर लाइव इवेंट रहिबो डेली राति 10टा बेल को क्लास रहिबो. सो वी विल प्लान टू क्लासेस. गोटे क्लास रोचे जाके करंट अफेयर ऊपर एंड द सेकंड क्लास इज ऑन जीएस. सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज सब्जेक्ट वाइज वी विल कवर the topics. जेमते आज start होची environment ecology, and after completing top 200 MCQs and various topics of environment ecology, we will go for some other topic, for example polity or history or science tech or current affair. एमते किछि topic को हमें नबा. So starting with the first one, environment ecology. The first question is, the Great Himalayan National Park is located where? Option A Himachal Pradesh, option B is Ladakh, option C is Jammu and Kashmir, option D is Jharkhand. So you can give the answer in the comment section if the video is visible properly. Otherwise recordings will be there for sure. ताहले मु वीडियो अपलोड कर देबी जदी बफरिंग होची या कम्युनिकेशन रे असुविधा होची ताहले. देखो करेक्ट आंसर हिमाचल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. हाँ तो ये कोठी अछि हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर. I think it is not going live, so do not worry, this will be uploaded anyways. So the Great Himalayan National Park कोठी अछि हिमाचल प्रदेश रे. राइट. देखो हिमाचल प्रदेश रे जते कि भी नेशनल पार्क अछि ताको आपण रिमेंबर भी करे पारिबे वाया अ स्मॉल ट्रिक. ट्रिक होछि देयर इज अ स्मॉल चाइल्ड कॉल्ड एज इंदर. कोन इंदर. ओके. एंड इंदर पाखरे कोन अछि ना फोन अछि. ओके, ही हैज अ फोन and a phone रे sim भी अछि, but he is not able to take out that sim with pin तो अछि किंतु सिम काढिबा आसे ही नै. तो से कोन करे, से सिम को माने से फोन को गोटे जारे फोपाड़ दियो, पिन को गोटे जारे फोपाड़ दे रागी के. ठीक अछि. आ तो से फोन को फोपाड़े कोडी खीर गंगा रे. देखो गंगा नहीं खीर गंगा कहले. ठीक अछि. खीर गंगा एंड पिन को फोपाड़ दिए हिमालय रे. हिमालय रे. ओके. सो दिस मच इज द ट्रिक. Now Himachal Pradesh रे जते कि भी national park अछि, how do you remember it? First thing, Indar Kila. Indar for Indar Kila. Indar Kila. Sim for Simbalwada. Simbalwada. Pin for Pin Valley. Pin Valley. Kheer Ganga for Kheer Ganga National Park. Kheer Ganga National Park. And Himalaya for the Great Himalayan National Park. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. देखो जहाँ को भी डाउट लागुथबो कि एठी टाइगर वगैरह पाया जानती कोठी टाइगर रिजर्व तो नहीं. हाँ तो टाइगर जोन ही उत्तराखंड रु चालू होबो. ठीक अछि. ऊपर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख नो टाइगर्स पॉसिबल नहीं. टाइगर गले सेठी कैट हे जबो या ब्राउन बेयर हे जबो. ओके. आंसर इज हिमाचल प्रदेश. सेकंड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स? ऑप्शन ए इज 1992, ऑप्शन बी इज 1953, ऑप्शन सी इज 1978, ऑप्शन डी इज 1918. So what do you think is the correct answer? Project Elephant is asked. Correct answer होची 1992. So as you know, all the animals are not same. So किछि animals को हमको कौन करबा को पड़िबो, protect करबा को पड़िबो through a different effort, right? So we have specialized projects for various different animals. For example, okay,
specialized projects to save the endangered species of the animals कौन रोचे. So these are implemented internationally also by World Wide Fund, UNDP, UNEP, IUCN इस संस्थाओं का द्वारा. For example, first is the Project Tiger. 1973 it was implemented. फिर Operation Crocodile. As you know, Odisha is the only state, first state जोटी की तीनिटा जगह species of crocodile मिलती. The saltwater crocodile, then the mugger, fresh water, and your घड़ियाल जहाँ मोटा घड़ा परिका था. Okay, ए परिका जहाँ मोटा घड़ा परिका था. घड़ियाल. So Operation Crocodile 1975. Tiger, crocodile. Okay. So you can remember like this कि crocodile, crocodile ऊपर tiger. तो first tiger 1973, फिर Operation Crocodile 1975. Then Project Rhino. Project Rhino is 1987. तापरे Project Elephant. So Rhino, भारी भरकम, and Elephant. So 1987 Rhino, 1992 Elephant. Snow Leopard 2009. Okay, Snow Leopard 2009. So first is Project Tiger. Tiger का ऊपर जाऊँचे crocodile ऊपर. So crocodile तापरे 1975. Then Rhino 1987. Then Project Elephant 1992. So you have this Hathi Mere Sathi. Okay, and various other program. Fair Project Snow Leopard 2009. Next question. What is the direction of flow of energy in an ecosystem? Option A, unidirectional. Option B, bidirectional. Option C is adiabatic. Option D is none of the above. So what do you think is the correct answer? Flow of energy in an ecosystem. देखो इधर हमको दीटा जिनसे बुझीबार अछि. First thing is we are talking about flow of energy. Okay. Second thing होची ecosystem. So कौनसे भी ecosystem, for example pond है पारे, forest ecosystem है पारे, grassland है पारे. So ecosystem can, what is ecosystem basically? Ecosystem is the structural and functional unit of the environment. Okay. The basic unit, जेमते human being रो basic unit होची RNA. Okay. The elements तारो basic unit होची कौन cell. Same thing, ecosystem is the structural and functional unit of the environment. So ecosystem can be very very small, like a drop of water भी गोटे ecosystem है पारे. And ecosystem can be as big as pond or forest or grassland. And ecosystem भितरे so the primary consumer किए थांती herbivore. जेमते एटे गछ अछि, गछ को first who consumes herbivore. फिर the primary carnivore, फिर secondary carnivore. Like this, or herbivore is the primary consumer, फिर secondary consumer, फिर tertiary consumer. So energy flows unidirectionally here, and energy will decrease, and decrease केमती decreases by the 1/10. Okay, answer is option A, unidirectional. Next question होची, Royal Manas National Park is located in which country? Option A, Nepal. B is Bhutan. C is Bangladesh. D is India. You must have heard about the Manas National Park. Manas National Park कोठी अछि आसाम रे. And here we are talking, friends, to Royal Manas National Park. This is also a part of the UNESCO site. ये भूटान रे अछि, not in India, right? India रे जहाँ अछि जो national park अछि ताको मैं मानस कहि दाओ. And Assam मित्र रो national parks you can remember by the trick called as Monk, Manas, Orang, Nameri, Kaziranga. Manas National Park, Orang National Park, Nameri National Park, Kaziranga. तापरे आपणकर कोण देहिंग पटकाई the new national park, Raimona National Park, the Raimona National Park तो ये सब जगह national park रोचे. And tiger reserve या भितरे कोटा Monk, ए चारिटा जगह tiger reserve, Monk, Manas, Orang, Nameri, Kaziranga. Next question, which of the following variety of fish is insectivorous? Katla, Hilsa, Gambusia, Rohu. Very simple. Gambusia fish insectivorous था है, या को mosquito control पाई use करा जाता है. Next, conventions देखिए, match the following. First column रे convention, second column रे it deals with what? So Budapest Convention, Bonn Convention, the Basel Convention. On the opposite side, cybercrime, migratory species, hazardous waste. So which of the following is or are the correct matches? One only, two only, one and two only, all of the above. So friends, environment ecology भितरे हमको किछटा convention protocol मने रखिबाको पड़िबो. So as you know, Budapest Convention ये cyber crime संगे related अछि. India यारो part नुहे. Bonn Convention migratory species संगे related अछि.
बासेल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, बमाको कन्वेंशन हजार्डस वेस्ट संगे रिलेटेड अच्छे। आंसर होची ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट मैचेस। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन होची sorry just a minute. Which among the following works as a carbon sink? Option A is ocean, option B is wetland, option C is forest, and option D is soil. So the correct answer is option A. 1, 2, 3 and 4 चारिटा जगह ही carbon sink पर का function करती. What is the carbon sink that can accept the carbon storage है पारिबो से ओके जेमती कि वेटलैंड्स भितर पीट फॉर्म रे कार्बन स्टोर होता है, फॉरेस्ट भितर काफी मात्रा रे कार्बन स्टोर हुए, ओशन स्टोर अ लॉट ऑफ कार्बन, लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल्स भितर स्टोर हुए जो कारण रो जदि डिफॉरेस्टेशन होची मोर एंड मोर डिफॉरेस्टेशन सो अपरूटिंग ऑफ द ट्री तो जति कि कार्बन स्टोर होता है दैट इज रिलीज्ड ओके सो या पई पुणी आपनकर रेड प्लस स्ट्रेटजी and other things you can remember. Next question होची the Bishkek Declaration is associated with the conservation and protection of which of the following species? Option A dolphin, option B whales, option C snow leopard, option D is lizard. Bishkek Declaration friends is associated with the protection of the snow leopard. The Bishkek Declaration snow leopard संगे associated अच्छे. Snow leopard पाई special program जहाँ India रे अच्छे that is your project Snow leopard from 2009 and please remember जेते की भी leopards अचंती सब vulnerable category रे आसीबे ठीक अछि इना clouded leopard vulnerable, snow leopard vulnerable, panther vulnerable okay so snow leopard is the answer. Next question, which of the following nutrient cycle is a sedimentary cycle? Hydrological cycle, carbon cycle, phosphorus cycle, nitrogen cycle. And select the correct answer. 1 only, 3 only, 1 and 2 only, all of the above. So friends, there are two kinds of cycle, the gaseous cycle and the sedimentary cycle. Okay, gaseous cycles रो जो property था से था कि मैंने full return हे जाए okay almost what is given out सेटा ही पूरा पूरा return हे जाए. Sedimentary रे proper या exact return पाइबा मुश्किल था रीजन बिंग दैट कि सेडिमेंट्री साइकिल्स लॉन्ग टर्म साइकिल था बहुत लंबा टाइम रही है वापस अगेन गोज बैक टू द अर्थ. गैशियस साइकिल्स ऑन द अदर हैंड फास्ट था. सो सेडिमेंट गैशियस साइकिल्स कौन था नाइट्रोजन साइकिल, यू हैव दिस वाटर साइकिल, यू हैव दिस कार्बन डाइऑक्साइड ओके और यू कैन से कार्बन साइकिल वाया कार्बन डाइऑक्साइड. सेडिमेंट्री माने फॉस्फरस है गला, सल्फर है गला तो वोल्केनिक इरप्शन रो जेमती सल्फर आसे, फॉस्फरस रॉक्स रो आसे सो दे रिक्वायर द अर्थ okay so एटे अपन ऑप्शंस को देखिले you will get the answer 3 only. 3 is the sedimentary cycle. Next question, which of the following national parks are tiger reserves? Bandipur, Bhitarkanika, Manas, Sundarban. Option A 1 and 2 only, option B is 1, 3 and 4 only, option C is 2, 3 and 4 only, option D is 1, 2, 3 and 4. So friends, भितरकनिका केउटी अछि ओडिशा भितरे and this is famous for the crocodiles. ये crocodile पाई famous अछि right, whereas if you talk about Bandipur, Manas, Sundarban these are the tiger reserves. Answer कौन हबो 2 को काटी देले. B is the correct answer 1, 3 and 4. Next question is, in which one among the following categories of protected areas in India are local people not allowed to collect and use the biomass? So option A biosphere reserve, option B is national park, option C is wetlands declared under Ramsar Convention, option D is wildlife sanctuary. So friends यहाँ को हमें केमते सॉल्व करेबा. देखो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट of 1972 this governs the protected areas. Protected areas नेशनल पार्क हे पारंती, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हे पारंती, बायोस्फीयर रिजर्व हे पारंती, टाइगर रिजर्व हे पारंती, कम्युनिटी रिजर्व हे पारंती, कंजर्वेशन रिजर्व हे पारंती. सो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व भितर कौन डिफरेंस था स्पेशली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बायोस्फीयर रिजर्व को एमती भी गवर्न करंती नहीं and this has a different project MAB under UNESCO. Now
सपोज वी वांट टू प्रोटेक्ट अ स्पीसीज कौन सी स्पीसीज को खाली प्रोटेक्ट करिबार अछि ताहाले ताको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी परिका डिक्लेयर करा जिवो एंड सेठी लोकल पीपल दे हैव लिमिटेड एक्सेस लिमिटेड परमिशंस फॉर द थिंग्स व्हेन यू टॉक अबाउट लेट अस से कि स्पीसीज को तथापि प्रोटेक्ट करा जाई पारु नाही तो आउट की स्ट्रिक्टनेस दरकार आउट की स्ट्रिक्टनेस हेले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क रे कन्वर्ट करा जाई पारिबो टोटली द ह्यूमन एक्टिविटीज विल बी रेस्ट्रिक्टेड all the human activities will be restricted here, okay? And suppose we want to save the species as well as the ecosystem, species को भी बचाइबार अछि और ecosystem को भी बचाइबार अछि, then we will declare it as a biosphere reserve. So here it is said कि local people are not allowed, तो local people कोथरे totally allow नहीं, national parks एथरे allow न थांती in general, okay? But किचरे national parks अच्छी सेठी, that is the exception. Why already local people are there, so they won't be driven out. But in general जदि practice रा देखिबा national park भितर local people activity human activity is restricted. So this is the difference given in the PDF. national park sanctuary biosphere reserve भितर कौन difference अछि याको अपन थरे देखि नेबे. Next question, the star labeling program has been formulated by the dash. Option A, Bureau of Energy Efficiency. Option B, UNCTAD. Option C, HAL. Option D is DRDO. So what do you think is the correct answer? Star labeling program has been formulated by dash. देखो friends, correct answer अब Bureau of Energy Efficiency. Okay, so video available अच्छी. Buffering हो चुकी. अशोक मेहर सुरजिता मानस पूजा नयन असित संदीप सत्यजीत संदीप बराल प्रियव्रता BZN पूजा सत्यजीत अरुणा. चलो वेलकम टू द सेशन एवरीबॉडी. आई वाज अनेबल मो मते काहरे भी चैट भी दिसुनी. आई थिंक देयर इज बिग कनेक्शन प्रॉब्लम चले छे. सो चलो एनीवेज recordings I will upload the recording. Okay, answer होचे BEE. Now what is BEE? BEE expanded the coverage of its star labeling. तो अपन को deep freezer को भी एबे ऐड करा जाउचे and light commercial air conditioners को भी ऐड करा जाउचे. So total it will cover 26 appliances. Deep freezer, okay. Then so why is it basically star rating record ही जिवो? So we want to save a lot of emissions of the greenhouse gases, right? The star labeling program has been formulated by the Bureau of Energy Efficiency under the Energy Conservation Act of 2001. Okay. During the event, a database on energy efficiency, jara naam chi Urja Dakshata information tool was also done. Okay. Etire World Resources Institute also helps in the same. It is buffering continuously, friends. Do not worry. I will upload the recording. If it is buffering continuously, then I'll upload the recordings. Do not worry. Let us move on to the next question. The Dash Forest Department for the first time has radio tagged an Indian pangolin. Odisha, Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh. Indian pangolin को radio tag किए करे चंदे. So the correct answer is Madhya Pradesh. World Pangolin Day केबे observe होता है? Pangolin कहीं की important अच्छी. This is the most trafficked animal. 15th February is World Pangolin Day and यार जो status रोचे जदि Chinese pangolin अच्छी, it is critically endangered. Indian pangolin IUCN is endangered. Okay. Pangolin को जगह रे पाया जाए हिमालय फुटहिल्स जेमती कि नेपाल, भूटान, देन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब जगह रे पाया जाए. Rani Jhansi Marine National Park is located in which state? Option A Puducherry, option B Uttar Pradesh, option C is Lakshadweep, option D is Andaman Nicobar. देखो करेक्ट आंसर होचे कोन? अंडमान निकोबार is the correct answer. Rani Jhansi Marine National Park located in which state? Andaman Nicobar is the answer. Okay.
अच्छा ये जो पूरा पीडीएफ अच्छी सिंस यू नो क्लास लाइव बफरिंग होची किछि तो सेति मु याको एबे कवर करूनी दिस इज द लिस्ट ऑफ द नेशनल पार्क्स जहाँ आपण पीडीएफ रे पाई परिबे ओके आई विल अपलोड द पीडीएफ राइट नाउ एंड रिकॉर्डिंग्स भी मु एबे ही अपलोड करबी तो जस्ट वंस यू कैन गो थ्रू द रिविजन कि कोठी को एनिमल्स मिलंती को नेशनल पार्क केउ जगह रे अछि एंड टुमारो व्हेन वी मीट एट 10 pm तो I will walk you through this. Okay. So ending the class here. Thank you so much and God bless you. आज तो ओडिशा सिविल सर्विसेज रो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जी डेली राती आपन को क्लास रहइबो करंट अफेयर्स रे एज वेल एज जीएस एंड राइट नाउ वी आर कवरिंग एनवायरनमेंट इकोलॉजी. Thank you so much. Good night. God bless you.